Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine this, right? You spend ages observing, you gain this really deep understanding, a truly groundbreaking insight, and then you share it, and people are just skeptical. Yeah, that's exactly what happened to the authors of the paper we're looking at today. Yeah. A really foundational piece. They tried to publish their work on strategic change, and the reviewers, well, they were used to quantitative stuff, clear hypotheses. Right. And they basically said, look, great story, good writing, sharp thinking, but... How do we know you didn't just, make this up, make up an interesting interpretation? Exactly. And that moment, that pushback, it became the catalyst. It drove them to develop an approach to answer that specific question. How do we show the rigor systematically behind these qualitative insights? Yes. Provide that solid, credible evidence for interpretations that come from deep engagement. And that's precisely what we're going to explore together now. This conversation, it's based on an LLM summary of a really significant article. It's from the Organizational Research Methods Journal. Which is, a top-tier ABDC A-star journal. The article is called Seeking Qualitative Rigor in Inductive Research, Notes on the Gioia Methodology. And the authors were Dennis A. Gioia from Penn State, Kevin G. Corley from Arizona State, and Aimee L. Hamilton from the University of Denver. And as we kind of walk through their ideas, I think you'll find something really affirming comes through. It's this sense that, wisdom, empathy, human understanding, you don't optimize those things. They're lived. They're lived, exactly. Yeah. They come from actually engaging with the world and the people in it. Yeah, absolutely. And whether you subscribe to this channel or not, we really warmly encourage you to find some time to read the actual article. It's thoughtfully crafted, rigorously reviewed. It really is worth a read. The link is right there in the show notes for you. And it strikes me as especially insightful for anyone maybe new to academic research. Oh, definitely. Especially if you're just starting your own research journey. It's like a compass, really, for navigating that often uncharted territory of understanding human experience within organizations. So, where do we start? The core challenge, maybe. Let's do that. Qualitative research. It has this amazing capacity for rich discovery, for finding genuinely new things, but it constantly faces this critique, doesn't it? The rigor question. Is it scholarly enough? Is it just stories? Precisely. How do you keep that creative spark, that potential for real revelation, but also convince people your conclusions are plausible, defensible? That's the tightrope walk. And that was the core question driving the Gioia methodology. Right, because often we're trained in the traditional scientific method, which is great, for extending what we already know, refining ideas, developing constructs. Those neat, measurable concepts, things you can quantify. Yes, and while that's incredibly useful, the authors argue it can sometimes blind us to maybe the more important work. Which is? Concept development. Actually finding new ways to think about things, not just measuring old ones. It's a subtle difference, isn't it? Concepts versus constructs. It is, but it's crucial. Think of concepts as broader, less defined maybe, capturing the essence of something before it gets pinned down into a measurable construct. The precursors. Exactly. And the authors argue really passionately that to truly get organizational worlds, we need new tools. And those tools are fundamentally new concepts. It makes me think of that Einstein quote, not everything that can be counted counts. And not everything that counts can be counted. Yes, that fits perfectly here. Especially when so much of the world we're trying to understand is, socially constructed. Meaning people build their reality together through interaction, shared meanings. Right, so you need methods that can capture that meaning-making process, not just count widgets. Okay, so that leads into the groundwork for this methodology. What are the core assumptions? There are two really key ones. First, as we just said, the organizational world. Deeply socially constructed. Built through interaction and interpretation. Okay, that makes sense. And the second? This one's quite profound, actually. It's that the people living in these organizations, the informants, they are knowledgeable agents. Knowledgeable agents, meaning? They know what they're doing. They understand their world. They can explain their thoughts, their intentions, their actions. They're not just passive subjects. They're active meaning makers. Okay. So you're not just observing behavior from the outside. No. You're listening to people who have genuine insight into their own reality. And this changes everything for the researcher. Your initial role, they say, is to be a glorified reporter. Glorified reporter. I like that. So just capture what they say. Pretty much.
Give voice to their interpretations. Don't slap your own theories or labels onto it straight away. They had that great example, didn't they, about avoiding threats and opportunities? Yes, from the Gioia and Thomas study. They deliberately didn't use those standard business school terms when asking top managers about their environment. And what happened? They found the managers never used those words. They talked about issues being strategic or political. Wow. So if they'd stuck to the existing theory, they would have missed it entirely. Missed a key way these managers actually made sense of their world. It shows how important it is to let the informant's language lead. But wait, researchers are knowledgeable too, right? We're trained to see patterns, make connections. Absolutely. And that's the balance. You can spot things, formulate concepts that maybe the informants themselves don't explicitly articulate. But how do you do that while staying true to their experience and meeting scientific standards? That's the tricky part. It is. And over time, they developed procedures for actually doing the research, ways to build in that rigor, and also ways to present the findings that clearly show the link state, emerging concepts, the final theory. It sounds very hands-on. You mentioned getting your hands dirty. Oh, it is. You're immersed. Yeah. Taking tons of notes, really trying hard to use the informant's actual words, not your own jargon. But there's a risk there, isn't there, of going native? Big risk. You get so close, you start to see the world only through their eyes. And you might lose that ability to step back and theorize, to see the bigger picture. So how do they counter that? They always built in a devil's advocate role within the research team. Someone whose job it was to critique interpretations, to challenge things that seemed maybe too close to just repeating the informant's perspective. That's smart. A built-in check. Yeah. And there's another great story, an anecdote from their early work that really highlights this need for flexibility, for being open to being wrong. Oh, yeah. What happened? So after months of interviews for the original Gioia and Chittipeddi paper, they felt pretty good. They went to present their initial findings to the top management team. The president listened, then just said bluntly, "You're so naive." Ouch. Yeah. He said, "Don't you know there's a kitchen cabinet that makes most of the important decisions? You haven't asked for access to those meetings, so you're missing the really important stuff, and your analysis shows your ignorance." Wow. Talk about a reality check. Huge. Humbling, right? Right. But they then got access to those kitchen cabinet meetings. And it changed things. Profoundly. The whole theoretical story shifted significantly. It just underscores how vital flexibility is in this kind of interpretive research. Your questions, your focus, it has to evolve as you learn more. You follow the data, follow the informants. Okay, so that sets the stage really well. Let's get into the heart of it then. How do you actually do this? How do you weave the data into theory? Right. So a key thing in the Gioia methodology is that interviewing and analysis aren't really separate stages. They're intertwined, happening concurrently. Yep. Early on, you're deep in what they call first-order analysis. And that is? That's all about staying close to the ground. Yeah. Capturing the raw, informant-centric terms, codes, categories directly from the interviews, from the observations, using their language. Sounds like it could get overwhelming. Oh, it absolutely can. You might feel completely lost in the data. Dennis Gioia famously says, you got to get lost before you can get found. I can imagine. How much data are we talking? You could easily end up with, say, 50, maybe even 100 different first-order categories just from the first 10 interviews or so. It feels like chaos initially. Okay, so you're lost. How do you get found? Well, as you keep going, interviewing more, coding more, you naturally start looking for similarities, for differences among all those initial categories. You begin to condense them, group them. Right, finding patterns. Exactly. And this is where the researcher, as a knowledgeable agent themselves, starts to shift gears a bit. You're thinking on multiple levels now. You've got the informant terms, the first order codes, but you're also starting to think at a more abstract level. The theoretical level. Yes. They call this second order analysis. You're looking for deeper structures, themes, dimensions. You're asking that crucial question. Okay, theoretically, what is really going on here? And this is where your own insights start to come in more. Precisely. Those maybe 100 first-order codes start distilling down into fewer, more powerful, researcher-centric themes or concepts. You're looking for those nascent ideas that really jump out. Things that aren't quite covered by existing theories. Exactly. Things like in their work, identity ambiguity or sense-giving, concepts that emerged from the data, not imposed on it. It's a really exciting moment when those start to crystallize. So you go from informant terms to researcher themes. How do you track that? How do you show it? This is maybe the most pivotal step, building the data structure. Okay, what's that? Imagine a visual map.
It clearly shows the progression from the raw data examples through your first-order informant terms up to your second-order theoretical themes and maybe even higher-level aggregate dimensions. So it makes the whole analytical process transparent. Totally. It's not just for organizing your own thoughts, though it's great for that. It's a powerful tool for demonstrating the rigor of your analysis to reviewers, to readers. They can literally see the path you took from data to concept. And their mantra for this was? No data structure, no nothing. Wow. Strong words. It really emphasizes the importance of that visible evidence trail. It does. It's about showing your work in a really systematic way. Now, you mentioned earlier avoiding existing theory, at least initially. Tell me more about that. Yeah, they suggest this period of semi-ignorance or maybe willing suspension of belief regarding the literature in the early stages. Semi-ignorance. Sounds a bit counterintuitive for research. It does, but the logic is sound. It's not about disrespecting prior work at all. It's about preventing prior hypothesis bias. Meaning letting what you already think you know blind you to what's actually new in the data. Exactly. You hold back on diving deep into literature so you can let the data speak for itself first. Keep your mind open to genuine discovery. But you do engage with literature eventually. Oh, absolutely. Once you've really wrestled with your data, developed those initial first and second order concepts, then you cycle back. You start considering your data and existing theory together. Moving from just inductive discovery towards something more abductive. It's like you're constantly going back and forth, refining your emerging ideas by seeing how they fit or don't fit with what's already known, testing them against the literature. Yep. And if you're working in a team, how do you handle different interpretations? That's crucial too. The team has to work really diligently to reconcile any differing views. Lots of discussion, going back to the data, making sure everyone arrives at a consensual understanding. That collective sense-making is vital for rigor. Okay, so you've built this data structure, this kind of static map. What's next? The next step is moving from that static anatomy of your theory to something more dynamic. The goal is to transform that data structure into a grounded theory model. Grounded theory model, so bringing it to life. Exactly. Think of the data structure as the anatomy, the parts. Yeah. The grounded theory model is the physiology, how the parts work together. It's where you start drawing the boxes and arrows. Showing the relationships, the processes. Yes. Illustrating the dynamic interplay between the concepts you've identified. This is often where the big aha, or as they put it, Shazam moments happen. Shazam moments. Yeah. Where you suddenly see these profound connections, these process dynamics that just weren't obvious when you're looking at the static list of codes and themes. You see the story, the mechanism. That sounds like the really exciting part where it all comes together. It really is. It's seeing the theory actually emerge and take shape. Okay, so now you have this dynamic model, this story. How do you share it effectively? How do you write it up? Presentation is key. They have some great advice here. Your introduction, for instance, needs to immediately engage the reader. Their phrase is, grab readers by the frontal lobes. Love that. So hook them in. Hook them in. Make the problem seem important, fascinating. Make the research question intriguing, and hint at the valuable, maybe surprising theoretical insights to come. And the methodology section. You said earlier it's quite detailed. Yes, unlike some qualitative write-ups that can be a bit vague, here it's about being thorough. Explaining exactly what we did. Laying out the design, the execution, the specific procedures of induction you used. Complete transparency. Showing the rigor again. Absolutely. Then the findings section, this is often the most compelling part to read. Because it tells the story. It tells the story, but it's a data-driven story. You're carefully presenting the evidence, showing how it leads to the new concepts, the theoretical discovery. And using lots of quotes. Yes, the findings should be suffused with informant quotes. And crucially, these quotes should clearly link back to the examples shown in your data structure. So the reader can follow the trail. Right. The underlying message is clear. Look, this is what people told us. We didn't make this up. Here's the evidence. You can see the quote, see the first order code it relates to, see how that builds into the second order theme. Makes sense. What about the discussion section? That's where you really infuse the findings with meaning. You connect your new concepts back to existing knowledge, existing theories. How does what you found relate to what we already thought we knew? Building bridges? Building bridges, showing the contribution. And ideally, you also focus on the transferability of your insights. Meaning showing it's not just specific to this one case. Exactly. Are there principles here that are portable to other contexts,
other domains. The goal isn't usually to generalize findings from a small sample to a whole population, like in quantitative work. It's more about generalizing to theory itself, enriching or developing theoretical understanding. And what about propositions? Are those necessary? They say not mandatory, but they can be really useful. Formal or informal propositions can act like a roadmap for future research. Suggesting next steps. Yeah. And they can also help bridge that old divide between qualitative and quantitative work, showing how these newly emerged concepts could eventually be developed into measurable constructs for others to test. It makes the work more generative. It brings things full circle in a way. It does. It shows a pathway from deep qualitative insight towards broader theoretical development and even potential quantification down the line. Now, as we sort of wrap up this exploration, the authors themselves offered a word of caution, right? They did, yes. Yeah. Thoughtful one. While lots of studies have successfully used the Gioia methodology, which is great, There's a but. there's a concern that it sometimes gets treated like a rigid template or a cookbook to be followed step by step. Just ticking boxes. Exactly. And they stress, look, this is a methodology, meaning a flexible orientation, an approach that's open to innovation, not a rigid method that you just replicate precisely every time. The goal isn't the format itself. No. The goal is always to rigorously demonstrate those deep connections between your data and the theory you're building. Use the structure if it helps show that, but don't force it. And they also cautioned about just using the first order, second order terms if it doesn't really fit. Right. Don't just slap the labels on if the analysis doesn't genuinely reflect that kind of layered structure. It has to be authentic to the research process and the data itself. It's about genuine rigor, not just performing rigor theater. Good point. It's about the substance, not just the appearance. Precisely. But ultimately, the Gioia methodology stands as this really powerful testament. It shows how qualitative research can and should stand confidently on its own. Providing that credible, defensible path. Yeah, a path from that raw, often messy, real-world data, all the way to truly emergent, insightful theory that genuinely deepens our understanding of organizations and the human experience within them. So, looking back on our conversation, it really feels like more than just a research method. It's almost a philosophy, isn't it? I think that's a great way to put it. A philosophy for how to approach that rich, complex, messy reality of human life in organizations. It's about listening. Really listening, letting new ideas bubble up from the ground. And then having a systematic, rigorous way to build those insights into solid theory. Theory that's both, academically sound and truly revelatory. So maybe a final thought for you, listening. As you go about your own work, your own learning and exploration, just consider this. What uncounted insights, what hidden understandings might you discover? If you really listen deeply to the human experience in whatever field you're in. Yeah. Free from those preconceived boxes and categories, what might emerge if you let those voices, those experiences truly guide your inquiry? It's a powerful question. And again, this has just been a glimpse into the work of Dennis Gioia, Kevin Corley, and Aimee Hamilton. Absolutely. We really do encourage you to read the full article, Seeking Qualitative Rigor in Inductive Research, Notes on the Gioia Methodology. It's well worth your time. And as we mentioned, the link is right there for you in the show notes. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পভলভ। আর আমি নিকিতা। একবার ভাবুন তো, গুণগত গবেষণা নিয়ে দারুণ একটা লেখা পর্যালোচকদের কাছে গেল, আর তারা বললেন গল্পটা তো বেশ, লেখাও ভালো, কিন্তু এটা যে শুধু একটা মনগড়া ব্যাখ্যা নয় সেটার প্রমাণ কই। এই রকম একটা কঠিন প্রশ্ন থেকেই কিন্তু একটা নতুন ভাবনা শুরু হয়েছিল। হ্যাঁ, মানে গুণগত গবেষণায় কিভাবে আরো একটু যাকে বলে রিগর বা কঠোরতা আনা যায়, তাই না? একদম। আর আজ আমরা অনেকটা সেই রকম একটা পদ্ধতি নিয়েই কথা বলবো। তবে শুরুতেই বলে রাখি, আজকের এই আলোচনাটা কিন্তু মূল যে রিসার্চ পেপার সেটার উপর ভিত্তি করে একটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল মানে এআই দিয়ে তৈরি করা সারাংশ থেকে নেওয়া। ঠিক, এতে আমাদের মূল পয়েন্টগুলোতে ফোকাস করতে একটু সুবিধা হচ্ছে। কিন্তু আসল লেখাটা সেটা প্রকাশিত হয়েছে অর্গানাইজেশনাল রিসার্চ মেথডস জার্নালে। এটা কিন্তু একটা টপ টিয়ার জার্নাল, মানে ABDC A*, এর গুরুত্ব অনেক। হ্যাঁ, আর এর লেখকরাও খুব পরিচিত। ডেনিস জিওয়া, পেন স্টেট ইউনিভার্সিটির, কেভিন জি কোলি, অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির,
আর অ্যামি এল হ্যামিল্টন, ইউনিভার্সিটি অফ ডেনভারের। আর আলোচনা শুরুর আগে একটা কথা মনে রাখা ভালো, তাই না? যে কোনো কিছু গভীরভাবে পড়লে বা বুঝলে তখন বোঝা যায় যে জ্ঞান বা সহানুভূতি, মানুষের বোঝাপড়া, এই জিনিসগুলো তো আসলে অপটিমাইজ করা যায় না। এগুলো আসলে যাপন করতে হয়, ঠিক বলেছেন। একেবারে। আর তাই শ্রোতাদের আমরা বলবো, অনুরোধ করব যে আপনারা এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, একটু সময় বের করে মূল আর্টিকেলটা পড়বেন প্লিজ। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, বিশেষ করে যারা একদম নতুন গবেষণার জগতে আসছেন, নিজেদের কাজ শুরু করছেন, তাদের জন্য আজকের আলোচনাটা খুব কাজের হতে পারে। কারণ গুণগত গবেষণার সমস্যাটা কোথায় বলুন তো? এর থেকে দারুণ সব নতুন জিনিস জানা যায়, কিন্তু ওই যে পদ্ধতিগত কঠোরতা বা স্কলারলি রিগার নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে। ঠিক, গবেষক যে ব্যাখ্যাটা দিচ্ছেন সেটা কতটা নির্ভরযোগ্য, সেটা শুধু তার নিজের ভাবনা নয় তো, এটা প্রমাণ করাটাই চ্যালেঞ্জ। এখানেই জিওয়াইয়া পদ্ধতি, জিওয়াইয়া মেথোডোলজি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতিটা ইন্ডাকটিভ রিসার্চের ক্ষেত্রে, যেখানে ডেটা থেকে তত্ত্বের দিকে যাওয়া হয়, সেখানে একটা স্পষ্ট গোছানো পথ দেখায়, কোয়ালিটেটিভ রিগার আনার চেষ্টা করে। আচ্ছা, বিশেষ করে নতুন ধারণা তৈরি বা গ্রাউন্ডেড থিওরি, যে তত্ত্বটা ডেটা থেকেই উঠে আসছে, সেটাকে স্পষ্টভাবে দেখানোর জন্য এটা সাহায্য করে, তাই তো? একদম। আর এই পদ্ধতিতে না, কনসেপ্ট আর কনস্ট্রাক্ট, এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যের উপর বেশ জোর দেওয়া হয়। ও আচ্ছা, এটা একটু বুঝিয়ে বলবেন, কনসেপ্ট আর কনস্ট্রাক্ট? হ্যাঁ, দেখুন, গবেষকরা অনেক সময় কি করেন, আগে থেকে যে কনস্ট্রাক্টগুলো আছে, যেগুলো মাপা যায়, সেগুলোকে আরও ভালো করার চেষ্টা করেন। কিন্তু জিওয়াইয়া পদ্ধতি জোর দেয় নতুন কনসেপ্ট বা ধারণা খুঁজে বের করার উপর। কনসেপ্ট যেটা আরও প্রাথমিক? হ্যাঁ, কনসেপ্টগুলো হলো কনস্ট্রাক্টের আগের ধাপ। এগুলো কোনো ঘটনা বা অভিজ্ঞতার মূল নির্যাসটা ধরতে সাহায্য করে। একটা কথা আছে না, যা গোনা যায় তার সবই যে গুরুত্বপূর্ণ তা নয়, আবার যা গুরুত্বপূর্ণ তার সবকিছু হয়তো গোনা যায় না। বাহ, দারুণ কথা। তাহলে এই পদ্ধতিতে তথ্য বিশ্লেষণটা কিভাবে হয়? মনে হচ্ছে দুটো স্তরের কথা আপনি বলছিলেন আগে। ঠিক, দুটো স্তর। প্রথমটা হলো ফার্স্ট অর্ডার অ্যানালিসিস, প্রথম স্তরের বিশ্লেষণ। এই পর্যায়ে গবেষকরা একদম সরাসরি অংশগ্রহণকারীরা যে ভাষায় কথা বলেছেন, যে শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেগুলোকেই কোড হিসেবে ব্যবহার করেন। অংশগ্রহণকারীর দৃষ্টিকোণটাই এখানে মুখ্য। একদম, তাদের কথা, তাদের অভিজ্ঞতা। যেমন ধরুন, কেউ ইন্টারভিউতে বারবার বলছেন, আমি কাজে দিশেহারা বোধ করি। এটাই একটা ফার্স্ট অর্ডার কোড হতে পারে, একেবারে সরাসরি কথাটা। আচ্ছা, বুঝলাম। আর দ্বিতীয় স্তরটা, সেটা কি? দ্বিতীয় স্তরটা হলো সেকেন্ড অর্ডার অ্যানালিসিস। এখানে গবেষক একটু দূরে সরে আসেন। তিনি ওই ফার্স্ট অর্ডার কোডগুলোর মধ্যে মিল খোঁজেন, অমিল দেখেন, সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করেন। সেগুলোকে একটু গ্রুপ করার মতো? হ্যাঁ, অনেকটা তাই। সেগুলোকে একত্রিত করে আরও একটু অ্যাবস্ট্র্যাক্ট, বিমূর্ত তত্ত্বভিত্তিক থিম বা ডাইমেনশন তৈরি করেন। এইখানে এসে গবেষকের নিজের বিশ্লেষণটা, তার একাডেমিক লেন্সটা কাজে লাগে। একটা উদাহরণ দিলে ভালো হয়। ধরুন, ফার্স্ট অর্ডার কোড হিসেবে পাওয়া গেল দিশেহারা বোধ করা, সময়ের অভাব, অতিরিক্ত দায়িত্ব। এগুলোকে গবেষক একসাথে করে একটা সেকেন্ড অর্ডার থিম বানাতে পারেন। যেমন ধরুন, কাজের অতিরিক্ত চাপ বা ওয়ার্ক ওভারলোড। ও আচ্ছা আচ্ছা, বেশ পরিষ্কার হলো। তাহলে এই যে ফার্স্ট অর্ডার কোড, সেকেন্ড অর্ডার থিম, আর তারপর হয়তো আরও বড় কোনো ডাইমেনশন, এগুলোকে কি কোনোভাবে সাজিয়ে দেখানো হয়? হ্যাঁ, এখানেই আসল মজাটা। এই পদ্ধতিতে একটা ডেটা স্ট্রাকচার বা ডেটা মডেল তৈরি করার কথা বলা হয়, একটা ভিজুয়াল চিত্র বা ম্যাপের মতো। ডেটা স্ট্রাকচার সেটা কিভাবে সাহায্য করে? এই ডেটা স্ট্রাকচারটা দেখায় যে কিভাবে একদম কাঁচা ডেটা থেকে, অংশগ্রহণকারীদের কথা থেকে ধাপে ধাপে গবেষক সেকেন্ড অর্ডার থিম এবং ফাইনালি অ্যাগ্রিগেট ডাইমেনশন বা মূল তাত্ত্বিক ধারণায় পৌঁছালেন। পুরো রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়, পুরো বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটা একদম স্বচ্ছ হয়ে যায়। ঠিক, আর এতেই গবেষণার ওই রিগার বা কঠোরতা প্রমাণ হয়। ওই যে শুরুতে প্রশ্ন ছিল না, এটা শুধু সুন্দর গল্প নয় তো, এই ডেটা স্ট্রাকচারটাই তার জবাব দেয়। এটা দেখায় যে ব্যাখ্যার ভিত্তিটা কোথায়। একটা কথা বলা হয়, নো ডেটা স্ট্রাকচার, নো নাথিং। ডেটা কাঠামো না থাকলে আসলে কিছুই ঠিকমতো জানা যায় না। অনেকটা তাই।
এই কাঠামোটা পুরো পথটা দেখিয়ে দেয়। তাহলে যারা একদম নতুন গবেষণা শুরু করছেন তাদের জন্য এই পদ্ধতিটা খুবই কাজের হতে পারে। এটা তো ডেটা অ্যানালিসিসের একটা বেশ স্পষ্ট ধাপ দেখিয়ে দিচ্ছে। অবশ্যই এটা একটা স্বচ্ছ এবং পদ্ধতিগত কাঠামো দেয়, কিভাবে অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতাকে সম্মান জানিয়েও একটা কঠোর তত্ত্বভিত্তিক বিশ্লেষণ করা যায় সেটা দেখায়। ডেটা আর থিওরির মধ্যে লিঙ্কটা পরিষ্কার করে, যেটা গবেষণাপত্র প্রকাশের জন্য খুবই জরুরি। একদম। কিন্তু একটা প্রশ্ন মনে আসছে, এত বেশি কাঠামোবদ্ধ হলে কি সৃজনশীলতা কমে যায় না? নতুন কিছু ভাবার সুযোগ কি কমে যায়? এটা খুব ভালো প্রশ্ন, অনেকেই এটা ভাবেন। কিন্তু আমার মনে হয় এই কাঠামোটা আসলে সৃজনশীলতাকে আটকায় না, বরং একটা শক্ত ভিত্তি দেয়। মানে রাস্তাটা জানা থাকলে আপনি আরও আত্মবিশ্বাসের সাথে এদিক ওদিক অন্বেষণ করতে পারবেন, তাই না? তা অবশ্যই ঠিক। একটা ভরসা থাকে যে মূল পথটা হারাবে না। হ্যাঁ, তাই জিওআইএ পদ্ধতি আসলে গুণগত গবেষণায় তথ্যের গভীরতা, নতুন কিছু খোঁজার যে সৃজনশীলতা আর পদ্ধতিগত যে কঠোরতা, এই তিনটের মধ্যে একটা সুন্দর ভারসাম্য আনার চেষ্টা করে। নতুন গবেষকদের জন্য এটা সত্যিই একটা ভালো গাইডলাইন হতে পারে। একদম। তবে আলোচনা শেষ করার আগে একটা প্রশ্ন রেখে যাই, কি বলেন, সবার ভাবনার জন্য। হ্যাঁ, বলুন না। গুণগত গবেষণায় এই রকম একটা পদ্ধতিগত কাঠামো মেনে চলাটা ঠিক কতটা জরুরি? এটা কি সবসময় নতুন কিছু আবিষ্কারের যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া সেটাকে শক্তিশালী করে, নাকি কখনো কখনো আমরা না বুঝেই নিজেদের চিন্তার গণ্ডিটাকে ছোট করে ফেলি? বাহ, এটা সত্যিই ভাবার মতো একটা প্রশ্ন। ধন্যবাদ। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। सोचिए, आप कोई बहुत बहुत ज़रूरी रिसर्च पेश कर रही हैं। कहानी शानदार है, आपकी सोच गहरी है, पर कोई पूछ बैठता है, भाई हम कैसे मान ले कि ये सिर्फ आपकी एक दिलचस्प मनगढ़ंत व्याख्या नहीं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, यही चुनौती थी डेनिस जियोया और उनके साथियों के सामने भी, जब वो अपना मशहूर पेपर पेश कर रहे थे। और उसी चुनौती से फिर एक नया तरीका, एक नई मेथोडोलॉजी जन्मी। बिल्कुल। आज हमारी बातचीत इसी मशहूर जियोया मेथोडोलॉजी पर है। देखिए, ये चर्चा असल में डेनिस ए जियोया, वो पेन स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, केविन जी कॉर्ली एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से और एमी एल हैमिल्टन यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर से, इनके एक बहुत ही अहम लेख पर आधारित है। अच्छा। और ये लेख छपा था ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च मेथड्स जर्नल में। ये रिसर्च की दुनिया में एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का, मतलब एक ABDC A स्टार जर्नल माना जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो इसी लेख का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब एक तरह के AI टूल से तैयार किया गया सारांश। और सच कहूं, इस लेख को थोड़ा गहराई से महसूस करने पर लगता है कि जो असली ज्ञान है, हमदर्दी है या इंसान को समझने की बात है, उसे किसी मशीन की तरह मतलब ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। सही बात है। उन्हें असल में जीना पड़ता है। और ये बात इस तरीके की बुनियाद में झलकती भी है ना? बिल्कुल सही कहा। और हम सभी सुनने वालों से ये गुजारिश भी करेंगे कि इस बेहतरीन और बहुत बारीकी से परखे गए लेख को पढ़ने के लिए जरूर समय निकालें। हाँ, जरूर पढ़ना चाहिए। चाहे आप इस चैनल से जुड़े हों या नहीं, लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। इसे पढ़ना वाकई फायदेमंद रहेगा। तो चलिए समझते हैं आखिर ये है क्या। खासकर उन लोगों के लिए जो शायद एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में नए हैं, अपना सफर बस शुरू ही कर रहे हैं। हाँ। अक्सर होता ये है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, मतलब जिसमें लोगों के अनुभव, उनकी कहानियां समझी जाती हैं, उस पे एक सवाल उठता है कि भाई ये कितनी ठोस है, कितनी रिगरस है, क्या इसके नतीजे भरोसेमंद है, क्या ये वाकई सबूतों पर टिके हैं। बिल्कुल, ये चिंता रहती है। और यहीं पर जियोया मेथोडोलॉजी काम आती है। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, एक व्यवस्थित, एक स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता है इंडक्टिव रिसर्च के लिए। इंडक्टिव रिसर्च मतलब? इंडक्टिव मतलब जब आप बिखरी हुई जानकारी या डेटा से शुरू करते हैं, जैसे इंटरव्यूज से मिली बातें या ऑब्जर्वेशंस, और उससे धीरे धीरे कोई पैटर्न, कोई थीम या कोई सिद्धांत बनाते हैं। मतलब जमीन से जुड़कर ऊपर की तरफ जाना। अच्छा, बॉटम अप अप्रोच। हाँ बिल्कुल। और इसका मकसद ये है कि रिसर्च में वो जो क्रिएटिविटी है, जो नई सोच है, वो भी बनी रहे, और साथ ही अकादमिक मजबूती, वो कठोरता भी आए। और देखिए, मजेदार बात ये है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये तरीका रिसर्च में हिस्सा लेने वाले लोगों की आवाज को बहुत अहमियत देता है।
हाँ, ये बहुत जरूरी है इसमें। उन्हें सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं माना जाता, बल्कि जानकारकर्ता या नॉलेजेबल एजेंट्स माना जाता है। मतलब वो लोग जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सही। तो रिसर्चर पहले उनकी बातों को उन्हीं के शब्दों में वैसे का वैसा नोट करता है। इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस। बिल्कुल जैसे कच्चे माल को इकट्ठा करना। हाँ, जैसे किसी कहानी के कच्चे धागे जमा कर लिए। लेकिन रिसर्च सिर्फ ये बातें दोहराना तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके बाद आता है सेकंड ऑर्डर एनालिसिस। अब यहाँ रिसर्चर का काम शुरू होता है। वो उन कच्चे धागों को यानी प्रतिभागियों के शब्दों और अनुभवों को देखता है और उनमें से पैटर्न, थीम और जो गहरे सैद्धांतिक विचार हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो निकालता है। अच्छा। ये रिसर्चर का अपना विश्लेषण है, मगर ये सीधे डेटा से ही उभर कर आता है, हवा में नहीं होता। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे अलग अलग रंग और बनावट के ऊन के रेशे जमा किए। ये हो गए फर्स्ट ऑर्डर कोड्स। हाँ। अब आप उनमें पैटर्न देख रही हैं। शायद सारे नीले रेशे थोड़े खुरदुरे हैं या लाल वाले ज्यादा मुलायम हैं। ये हो गए आपके सेकंड ऑर्डर थीम्स। बिल्कुल। और फिर शायद आप इन पैटर्न्स को बुनकर एक बड़ी तस्वीर या सिद्धांत बना रहे हैं। हाँ, जैसे कि सिस्टम की फलां बाधाएं यूजर में निराशा पैदा करती हैं। ये एक बड़ा सिद्धांत बन गया। एकदम सही। और देखिए, इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है डेटा स्ट्रक्चर बनाना। डेटा स्ट्रक्चर वो क्या होता है? ये एक तरह का विजुअल नक्शा होता है। ये दिखाता है कि आप कैसे कच्चे डेटा जैसे इंटरव्यू के कुछ हिस्से से पहले फर्स्ट ऑर्डर कोड्स तक पहुंचे, फिर उन कोड्स से कैसे सेकंड ऑर्डर थीम्स बनी और फिर उनसे कैसे बड़े डायमेंशंस या सिद्धांत बने। अच्छा, मतलब पूरी यात्रा दिखानी पड़ती है। हाँ, इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो जाती है। कोई भी देख सकता है कि आपके नतीजे हवा हवाई नहीं हैं, बल्कि डेटा में उनकी जड़ें हैं। हाँ, ये तो नए रिसर्चर्स के लिए वाकई बहुत मददगार होगा, क्योंकि अक्सर ये डर रहता है कि इतने सारे डेटा में कहीं खो ना जाएं। बिल्कुल, ये उन्हें भटकने से बचाता है और विश्लेषण को एक स्ट्रक्चर, एक दिशा देता है। और ये भी दिखाता है कि कैसे आप लोगों के असल अनुभवों का सम्मान करते हुए भी, मतलब उनकी बात को महत्व देते हुए भी, रिसर्च में कुछ नया और सैद्धांतिक योगदान दे सकते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, पूछिए। क्या इसमें ये खतरा नहीं कि रिसर्चर अनजाने में अपने ही विचार, अपने पूर्वाग्रहों को ही पैटर्न का नाम दे दे? कैसे पक्का करें कि ये वाकई डेटा से ही निकला है? ये बहुत अच्छा और जरूरी सवाल है। देखिए, यही वो डेटा स्ट्रक्चर काम आता है, क्योंकि वो पूरी यात्रा दिखाता है। प्रतिभागी के शब्द, फिर आपके कोड, फिर आपकी थीम और फिर आपका बड़ा सिद्धांत। कोई भी देख सकता है कि आपने ये पड़ाव कैसे पार किए। अब ये कहना कि इससे पूर्वाग्रह पूरी तरह खत्म हो जाता है, वो शायद सही नहीं होगा, पर ये उसे छुपाता नहीं, सामने लाता है। पारदर्शिता बढ़ जाती है। सही बात है। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये कोई जादू की छड़ी या बना बनाया नुस्खा नहीं है जिसे बस आंख बंद करके हर जगह लगा दिया। अच्छा, मतलब कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक लचीला तरीका है। इसे हर रिसर्च के संदर्भ, उसके सवालों के हिसाब से ढालना पड़ता है। इसमें वो रचनात्मकता और एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से चलने के बीच एक संतुलन साधना पड़ता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जियोग्राउंड मेथोडोलॉजी जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में एक तरह से रचनात्मक खोजबीन और जो व्यवस्थित कठोरता है उसके बीच तालमेल बिठाने का एक काफी ताकतवर रास्ता देती है। हाँ, बिल्कुल। ये लोगों की आवाज, उनके अनुभव का सम्मान करती है और साथ ही रिसर्चर्स को डेटा से भरोसेमंद सिद्धांत बनाने में भी मदद करती है। एकदम सही कहा आपने। और चलिए, जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ। जब हम किसी रिसर्च मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके तयशुदा नियमों पर सख्ती से चलने और उसे अपनी रिसर्च की जरूरत के हिसाब से बदलने, यानी उसे अनुकूलित करने के बीच वो सही संतुलन कैसे खोजा जाए? बड़ा दिलचस्प सवाल है। वो मेथड मुमकिन बनाने के लिए बना था, सोचने वाली बात है।